Hello everyone. In the previous video, we have learned about the various methods of the input. अब इस वीडियो में हम various output formats के बारे में बात करेंगे कि भाई जब हम किसी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में काम कर रहे होते हैं या हम किसी प्रोग्रामिंग सिनेरियो पे काम कर रहे होते हैं या किसी टेस्ट केस को हमें सेटिस्फाई करना होता है तो हमने देखा कि इनपुट टेस्ट केस में हमारा इनपुट का पैटर्न क्या हो सकता है, कॉमा सेपरेटेड हो सकता है या मान लीजिए आपका हैश सेपरेटेड है या कोई भी सिंबल सेपरेटेड है तो उसको डील करने का तरीका हमने देखा। फिर हमने कमांड लाइन आर्गुमेंट के तरीके से देखा कि हम इनपुट को कैसे ले सकते हैं ना। सिमिलरली वी विल बी चेकिंग फॉर वेरियस आउटपुट फॉर्मेट्स आल्सो, है ना। तो लेट बी स्टार्ट विद द बेसिक वन, है ना। तो हम सबसे पहले यदि हमें स्क्रीन पर कंसोल पर प्रिंट कराना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन में। और सपोज आई एम राइटिंग द प्रिंट हेलो, है ना। व्हेन यू रन दिस कोड सो यू कैन सी द हेलो इज देयर, है ना। अब हमने हेलो पास करा है, सपोज प्रिंट हेलो के साथ मैं लिखता हूं यहाँ पर प्रिंट वर्ल्ड। वी आर हैविंग द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो जब मैं नॉर्मली डेटा को स्ट्रिंग डेटा को पास कर रहा हूँ तो ये प्रिंट फंक्शन जो है आपकी कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट की फॉर्म में दे देता है। लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि यदि हमें देखना है कि मैं केवल प्रिंट में कोई आर्गुमेंट पास किए हुए डेटा और प्रिंट फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट आपको एक न्यू लाइन पास कर रहा है ना। सो प्रिंट विदाउट एनी आर्गुमेंट और विदाउट एनी डेटा इज गिविंग यू द न्यू लाइन। सो दैट इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, है ना। डिफॉल्ट gives न्यू लाइन। तो हम इस तरीके से एक आर्गुमेंट को पास करके प्रिंट फंक्शन का यूज करके स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा सकते थे। और हम विदाउट यदि उसके यूज करते हैं प्रिंट को जिसमें कि हम कोई डेटा पास नहीं कर रहे हैं तो आपको एक न्यू लाइन वो ऐड कर रहा है ना। अनदर वे कि हम प्रिंट फंक्शन को जो यूज कर सकते हैं उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको ए बी सी इज इक्वल टू 10 20 एंड 30 असाइन करता हूँ, है ना। ये हमने देखा हुआ है कि हम वी आर एबल टू असाइन द मल्टीपल वैल्यूज फॉर द मल्टीपल वेरिएबल्स इन सिंगल लाइन इन पाइथन। ये इसकी पाइथन का एडवांटेज है। तो यदि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ इन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा सॉरी सी इज देयर ओनली, सो व्हेन आई रन दिस कोड तो कैन यू सी दिस 10 20 एंड 30। लेकिन एक चीज इसमें देखना होगा कि जब हम इन आर्गुमेंट्स को पास करते हैं वो सारे के सारे आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट स्पेस सेपरेटेड होते हैं, वो सिंगल लाइन में जाते हैं, है ना, मल्टीपल आर्गुमेंट। सो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू चेंज द सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पेस, सपोज कॉमा, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी आर हैविंग वन स्पेशल thing in a Python, that is a separator. So what this separator do? The separator attribute will separate your multiple objects in a particular symbol. So हम इसको यूज करते हैं। Let me take this code. क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमा और लगाएंगे और हम सेपरेटर एट्रीब्यूट जो है उस पर हम कॉमा पास करते हैं ना। सो व्हेन आई रन दिस कोड सो कैन यू सी दिस। सो बाय डिफॉल्ट जो आपका 10 20 30 जो स्पेस सेपरेटेड था वो फाइनली आपका कॉमा से सेपरेटेड हो गया, है ना। सो इंस्टेड ऑफ कॉमा यू कैन पास एनी अदर symbol, like suppose I'm passing the hash or let me take the at the rate. So when I run this code, so can you see this, this has been separated by using the at the rate instead of space only, है ना। तो जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को मैं पास कर रहा हूँ और सिंगल लाइन में सेपरेशन में अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट पास करना चाहता हूँ, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि यूजर से आपने इनपुट लिया हुआ है सेपरेटर tab is equal to input and please separator. When you run this code and here you will pass your sep object. When I run this code, you can see it is asking for the separator. Suppose I have given the comma. So when I run this code, you can see this the comma separated value, है ना। When you run this code again, when I pass this hash, you can see this is the hash separated value, है ना। And when I run this code again and you pass the at the rate, you can see this at the rate separated. So what I've done, I've used the separator attribute and I have taken the user defined data to separate this. This is very much helpful for the kind of codes where you will be requiring the आउटपुट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, जो कि आप देखेंगे टीसीएस कोड बीटा है आपका या टीसीएस एनक्यूटी है
या इन्फोसिस का इन्फी-टीक्यू वगैरह एग्ज़ाम्स हैं, उसमें इस तरीके के आपको सेपरेशंस आउटपुट फॉर्मेट में देना पड़ते हैं ना? सो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कांसेप्ट। नाउ अनदर वे टू प्रिंट सपोज़ आप लोग देखिए यदि मैं प्रिंट स्टेटमेंट में हेलो लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ। Run this code, so can you see this? Once this print statement has been executed, it is reaching to the next line and printing the Rahul. जब मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पास कर रहा था, तो वो सिंगल लाइन पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के सेपरेशंस के साथ उसको प्रिंट कर रहा था। लेकिन जब मैं मल्टीपल लाइन्स में कोड लिख रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, वो न्यू लाइन लेता है, उसके बाद दूसरे प्रिंट स्टेटमेंट के डेटा को प्रिंट करता है। नाउ आई वांट टू कंट्रोल कि मैं भाई इस सेपरेशन को जो लाइन बाय लाइन हो रहा है और अलग-अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स हमारे हैं, उसको लिख रहा हूँ एंड आई वांट टू कंट्रोल कि जो सेपरेशन है वो होना चाहिए, है ना? सो व्हाट आई विल डू I have to change my code here और मुझे उसकी एंड एट्रीब्यूट में चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द एंड इज इक्वल टू सपोज रन दिस कोड सो कैन यू सी दिस लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगी यदि मैं इसके बाद लिखता हूँ प्रिंट हेलो राहुल दुबे When I run this code, so can you see this? This hello के बाद जो एंड सेपरेशन जो आपका न्यू लाइन कैरेक्टर आ रहा था, उसके प्लेस पर कॉमा आ गया लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम हियर. So for every time you have to use this and is equal to suppose like comma. When you run this code, so you are having hello Rahul, then again your Dubey. When you will write anything else after this, you will be getting the same new line. Indian, India. Okay, so you can see this. So to control this new line separation, we use the AND attribute, and to control the multiple object separation in the single line, we will be using the separator attribute. Now another way, use this print function विद द फॉर्मेटिंग ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए हम हर बार जो देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम हम स्ट्रिंग डेटा का यूज करते हैं और उस स्ट्रिंग डेटा में ही हम अपने इंटीजर को या हमारे वेरियस टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसको पास कराने की कोशिश करते हैं जब भी हम आउटपुट कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट के थ्रू कुछ प्रिंट कराते हैं ना। तो हम नाउ वी विल सी द प्रिंट फंक्शन विद मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर। मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर से हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करके हम अपने प्रिंट फंक्शन के साथ करेंगे दैट वी विल सी, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ मल्टीपल डेटा लेता हूँ सपोज ABCD और इसमें मैंने डेटा साइन जो करा है दैट इज 10 10.5 आई एम टेकिंग द राहुल एंड सपोज फॉर D आई एम यूजिंग वन डिक्शनरी colon Rahul and I want to print this data, है ना। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखता हूँ प्रिंट तो मेरे पास इंटीजर डेटा को प्रिंट करने के क्या तरीके हैं, है ना। तो कौन-कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं। तो यदि मैं इसमें लिखना चाहता हूँ इट इज़ एन इंटीजर डेटा और वो कौन सा डेटा है हमारा सपोज A को प्रिंट कराना चाहता हूँ मैं 10, है ना। तो व्हाट यू नीड टू डू वी विल रिक्वायर टू यूज़ द परसेंटेज I or you can use a percentage D as like C. What you do for this string, you will be taking the percentage. Just a minute. For this string, you will be taking the percentage and you will be passing the data that need to be printed in place of the I or D. है ना? When I run this code, तो can you see this? It is an integer data 10 or 10. मतलब
यदि मैं ए को पास कर रहा हूँ और इंटीजर डेटा को ले रहा हूँ, तो मैं परसेंटेज आई या परसेंटेज डी इन दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज कर सकता हूँ। यदि मेरे को फ्लोट डेटा प्रिंट करना है, तो फ्लोट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई एम टेकिंग दिस कोड, इट इज ए क्या, है ना? और परसेंटेज आई के प्लेस पर मैं क्या चाहता हूँ? सपोज मैं फ्लोट डेटा को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो व्हाट आई नीड टू डू, परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर मैं क्या डेटा पास करूंगा? सपोज मैंने डेटा जो फ्लोट में था मेरे पास बी में वैल्यू, मैंने रन दिस कोड, सो कैन यू सी दिस फ्लोट डेटा इज देयर, है ना? सो 1 2 3 4 5 6, है ना? सो आफ्टर आफ्टर डेसिमल यू आर हैविंग द 6 वैल्यूज, है ना? आप इस 6 वैल्यूज को कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर मैं लिख सकता था कि भाई लास्ट की 2 वैल्यूज तक ही दो, ज्यादा नहीं, है ना? So when you run this code, so you will be using the 0.2f, so it will be just returning the 10.50, है ना? तो इस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, और फिर हम इसमें फ्लोट वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं ना। अब मैं देखता हूँ कि व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, है ना? मैंने आपको डिक्शनरी भी लिया हुआ है डी में, है ना? लेट मी ट्राई टू हैव अ लिस्ट एंड टपल्स आल्सो। उसको हम किस फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू डील कर पाएंगे और कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो लेट मी चेक इट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, एक लिस्ट लेता हूँ, एल एस टी इज इक्वल टू 1 2 3, देन आई टेक अ टपल दैट इज टी इज इक्वल टू 3 4 5 6 टपल लिस्ट। तो व्हेन आई पास, पहले हम राहुल जो स्ट्रिंग है उसको प्रिंट करते हैं ना, सो आई एम टेकिंग द सेम कोड हियर, इट इज ए स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में जो डेटा है उसको हमें पास करना है, तो हमें कैसे लिखना पड़ेगा? परसेंटेज एस, दिस परसेंटेज एस इज कैपेबल टू हैंडल द स्ट्रिंग। तो परसेंटेज एस, और हमारे पास स्ट्रिंग डेटा कहाँ पर है? सी डेटा, सी डेटा टाइप में हमारे। सो व्हेन आई रन दिस कोड यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, वन bracket is missing here, so you can see it is a string data and this has been taken as a string। लेकिन मैं डिक्शनरी और टपल्स को भी एज इट इज यूज करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, आपको उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करना पड़ेगा, है ना? सो दिस परसेंटेज एस फॉर ऑल काइंड ऑफ डेटा लाइक दिस, so I'm here I am writing it is a dictionary, है ना? It you will be passing a percentage s, and here you will pass the data percentage, and the dictionary is in the d. So bracket you will be passing a d only. Bracket you will be passing a d data. Okay. So it will give you the dictionary. Similarly, for list, you need to do passing the percentage s, and for this you have to pass the list lst. Similarly, for tuple is a tuple. Here you have to pass the t. When you run this code, you can see you are having just a minute. List tuple, not all argument converted during string formatting. Okay. Okay, so you cannot use it with the tuple right now. So when you run this code, you can see the list and dictionaries has been treated as
a string only, and you have the output of list, dictionary, and the all the data types like integer, float, and string with the help of percentage s only. Okay, so next we move further. दो और इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो स्ट्रिंग के साथ यूज़ होती हैं और प्रिंट में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, है ना? और बहुत फैंसी मेथड्स हैं जो हमारे स्ट्रिंग के या प्रिंट फंक्शन के आउटपुट के साथ प्रिंट करने के लिए यूज की जाती हैं। सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट मेथड इज द फॉर्मेट मेथड ऑफ स्ट्रिंग with print function. Another one is f string. First we check for the format method of the string. अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम। सपोज मैं एक डेटा लेता हूँ, a is equal to Rahul. I will write here the name, that is big B, and now I write here age is equal to suppose 36. When I print person name is, if I'm using the format method, so I have to pass like this that we call a replacement operator, है ना? तो जीरोथ इंडेक्स पर मैं पर्सन का नेम पास करूंगा, द पर्सन नेम इज जीरो, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, एंड his age is replacement operator 1. But how we will use it? We have to pass the format, and we have to call the format method of this string inside the print function. Then I will pass the name and age arguments. When I run this code, just a minute, format name. Okay, so this print was already there. That is what the reason for the error. So when I run this code again, you can see the person name is Raul and his age is 36. So it means that you're having this variable and this variable, and you want to use these variables directly inside your print function, inside your string during the print statement, because this is also the one way of the formatting for the output of the data over the console screen. तो आप format method का यूज करके इन variables के डेटा को पास कर सकते हैं ना. Last one is f strings. What you need to do when you will pass the data inside the print, and if you're using the f before passing any string, so when you write suppose the person name is, what you need to do, you will be using the replacement operator and passing the variables directly, and age is replacement operator, and you will be writing the age here only. So what is the benefit of this f string directly? You will be passing your variable data in a replacement operator directly, instead of passing the argument to the format method and passing the position of that particular variable inside your string. So this is the another fancy way of the f string. So by using these methods, I will say format method, f string, various format specifiers, and various separators like and separator attribute, you can print data in a various format in the Python. And that is very much helpful when you're doing the competitive programming, when you're attempting for any kind of placement and QTs like national qualifier test जो आप देते हैं उन सभी के लिए, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपका इनपुट फॉर्मेट और आउटपुट फॉर्मेट जो है वो दोनों पर डिपेंड, क्वेश्चन के जो टेस्ट केसेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं ना. सो इट्स ऑल अबाउट द प्रिंट स्टेटमेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द आउटपुट. थैंक यू.